उत्तरायं दक्षिणे मां सदावतुम् ॐ ह्रीं श्रीं त्रयक्षरो मन्त्रो नैऋत्यां मे सदावतुं कवे जिह्वाग्रवासिन्ये स्वाहां मां वारुणे व्रतुम् ॐ सदायम्बिकाय स्वाहां वायव्ये मां सदावतुम् ॐ गद्यपद्यवासिन्ये स्वाहां माम् उत्तरे वतुम् ॐ सर्वशास्त्रवासिन्ये स्वाहेशान्यां सदावतुम् ॐ ह्रीं सर्वप्रजापतित्याय स्वाहां शुद्धं सदावतुम् ॐ ऐं ह्रीं पुस्तकवासिन्ये स्वाहा अधो मां सदावतुम् ॐ ग्रन्थबीजस्वरूपाय स्वाहा मां सर्वतोवतुम् इति ब्रह्मे कथितं विप्रं सर्वमन्त्रोदविग्रहमिदं विश्वजयं नामं कवचं ब्रह्मरूपिणीं पुरां श्रुतं धर्मकथ्रातं पवर्वते गन्धमादनीं त्वं स्नेहाम्याख्यातं प्रवक्तं न कस्यचित् गुरुमभ्यर्चनं विधिवदं सालङ्कारचन्दने प्राणामे दण्डवद्भौमो कवचं धारयत्सुधिं चतुर्लक्षं जपिन्नेवं सिद्धं तु कवचं भवेत् यदि स्यात् सिद्धिकवचो बृहस्पतिः समो भवेत् महावाग्मीकवीन्द्रश्च त्रैलोक्यं विजयी भवेत् शक्नोति सर्वजेतुं स कवचस्य प्रसादितम् इति ते कारणवशात् कृतं कवचं मुनिं स्तोत्रं पूजा विधानं च ध्यानं च चन्दनं तथामिति ब्रह्मवैवर्तमहापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण नारद संवादे सरस्वती कवचं नाम चतुर्थोऽध्यायः। सरस्वती कवचम संपूर्णम ध्यान सूर्य ब्रह्मदेव की जय, सरस्वती माता की जय। हरि ओम। हाथ में अक्षत या फूल लेकर के प्रार्थना कीजिए। क्षमा प्रार्थना सरस्वती माता से विद्या दे, ज्ञान दे, अविद्या को हर करके आगे का रास्ता दिखाएं। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहों न चावहनं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथां न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणक्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणाविरहेणालसतयां विधेया शक्यतवा त्वचरणयोर्याच्युतिरभूतं तदेतक्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवतिम् पृथिव्यां पुत्रस्ते जननी बहवः सन्ति सरलां परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुतं मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नु तव शिवें कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवतिम् जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवानरचितां नवदत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मयां तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषें कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवतिम् परित्यक्ता देवा विविधसेवाकुलतयां मया पञ्चाशीतिरधिकमपनीते तु वयसिम् इदानीं जन्मातस्त्वयदि कृपानायपि भवितां निरालम्बो लम्बोदर जननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरां निरातङ्को रङ्को विहरितचिरं कोटिकणकम् तवापर्णे करणे विशते मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननी जपनीयं जपविधं चिताभस्मालेपो गरलं सन्दिक्पटिधरं जटाधारी कण्ठे भुजगपति हरिपशुपतिम् कपालीभूते
येषो भजते जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणिग्रहणं परिपाठी फलमिदम् मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च में विज्ञानापेक्षा शशिमुखे सुखे च पितः पुनम् अतस्त्वसन्न्यासे जननी जननं यतु मम वै मृडानि रुद्रा